शोभा जी, सर ने बैक टेस्टिंग का होमवर्क दिया था। हाँ, वो करना है सर, मैम। तो जिन लोगों ने वो होमवर्क किया है हम्म। उन लोगों की सर अलग से क्लास ले रहे हैं, जिसमें उनका होमवर्क डे बाय डे चेक हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, और आगे उसमें और क्या किया जाएगा। तो उस आई मीन जो जहां तक सर ने सिखाया है और उसके बाद बैक टेस्टिंग दी है, तो उसका फर्दर स्टेप वो तभी सिखा रहे हैं जो बैक टेस्टिंग करके होमवर्क सबमिट कर रहे हैं। वो बैंक निफ्टी वाला क्या? हाँ जी, बैंक निफ्टी वाला। एक्चुअली मेरा अभी ढंग से सेशन नहीं हो पा रहा ना, कुछ मेरा तो खुद मैं वो रखी, तो मैं करूंगी। तो अगर कोई हेल्प चाहिए किसी को तो कोई, कि हाँ। प्रकाश जी से भी मैं यही बात बोल रही हूँ। प्रकाश जी, आर यू देयर? सुन पा रहे हैं मुझे? यस मैम। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि दोबारा से सेशन देखना है, सुनना है, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा अरेंज कर दूंगी। बट आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू गो थ्रू दैट सेशन अगेन और ओके। समझे कि क्या एक्चुअल में बैक टेस्टिंग करनी है। उसमें जो हेल्प चाहिए आपको मेरी तरफ से, सर की तरफ से, वो आपको मिलेगा। लेकिन होमवर्क करना और बैक टेस्टिंग करना वो आपको खुद करना पड़ेगा, वो मैं नहीं कर सकती। नहीं, वो तो हम लोग को ही करना पड़ेगा मैम। अगर रिकॉर्डिंग वापस देख सकते हैं क्या? मैं आप मुझे जब भी आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया, दोबारा देखना है, ये हाँ। प्रकाश जी से भी मैं ये बात बोल रही हूँ। हाँ मैम। नए लोग हैं, बाकी लोग, उन लोगों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, तो अगर किसी को वो वीडियो फिर से देखनी है तो मुझे पर्सनली मैसेज डाल दो। मैं वो ठीक। वीडियो एक कॉमन टाइम पर अरेंज कर दूंगी, एक अलग से ग्रुप बना दूंगी, और देखकर दोबारा से देखो। मैं ये पर्सनली 2-5 मिनट इसलिए एक्स्ट्रा ले रही हूँ बिकॉज आई पर्सनली फील कि मेंटोर अगर किसी चीज पर इतना जोर दे रहा है, इतना बार बार बोल रहा है, इतने मैसेजेस डाल रहे हैं कि होमवर्क सबमिट करिए या दोबारा से इस चीज को करना है, अपने गैप्स क्लियर करने हैं, तो वो बंदा बेवकूफ तो नहीं होगा। कुछ अच्छे के लिए किसी न बोल रहे किसी रीजन से ही बोल रहा है, और ना ही उसमें उसका खुद का कुछ भला है। वो चाह रहा है कि आपका भला हो, है ना? तो 100%। इसीलिए मैं पर्सनली ये चाह रही हूँ कि अगर लग रहा है कि नहीं आ रहा है तो मुझसे बात करो, मुझे मैसेज डाल दो, मैं अरेंज कर दूंगी दोबारा से सेशन। पूरा सेशन शांति से बैठकर देखो, टाइम निकाल कर नोट्स बनाओ, और उसके बाद उसको बैक टेस्टिंग करो। बैक टेस्टिंग करते वक्त कोई प्रॉब्लम आ रही है, सर को पूछो। एक बार फोन नहीं उठा रहे हैं, दोबारा करो, करो उस काम को, और उसके बाद सर को सबमिट करो, और फिर होमवर्क सेशन में सर अभी उसको बार बार रिपीट कराएंगे। ठीक है? हैं। थैंक ओके, यू मैम। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बुक रीडिंग का सेशन। बुक ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस। एंड हेयर आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। एक मिनट में चेक कर लूं लास्ट टाइम हमने कहाँ तक रीड किया था। पेज नंबर 41 तक हमने कर लिया था clear, and we will start with the page number 42 now. And I want love to start with the reading today. But at the same time, many people are born to immature and unreasonable parents or encounter emotionally disturbed teachers, coaches, and employees who subconsciously or intentionally inflict their personal problems on anyone they perceive as having less power. What's even worse is many of the people who have a tendency toward victimizing others are also clever enough to do it in a way that makes their victim believe they cause their own pain. In any case, whether our painful experiences are the result of an act of love or intentionally inflicted is something each of us will have to determine for ourselves. The bottom line is that as adults, when we get into a trading mode, we don't realize how natural it is to associate the instantaneous shift from joy to pain that we experience so often as children with the same instantaneous shift from joy to pain that occurs when we trade. The implications are that if we haven't learned to accept the inherent risks of trading and don't know how to guard against making these natural connections between our past and the present, we'll end up blaming the market for our results instead of taking responsibility for them. Even though most people who trade consider themselves responsible adults, only the very best traders have reached a point where they can and do accept complete responsibility for the outcome of any particular trade.
Everyone else, to one degree or another, assumes they are taking responsibility, but the reality is that they want the market to do it for them. The typical trader wants the market to fulfill his expectations, his hopes, and dreams. Society may work this way, but the markets certainly don't. In fact, in society, we expect other people to behave in a reasonable and responsible way. When they don't, and if we suffer as a result, society makes remedies available to rectify the imbalance and make us whole again. The market, on the other hand, has no responsibility to give us anything or do anything that would benefit us. This may not be the way markets are advertised, and certainly not the impression they want to project, but the reality is every trader who participates in the market does so for his own benefit. The only way one trader can benefit is if some other trader loses, whether the loss is in actual dollars or as in a future trade, or lost opportunity as in a stock trade. Now, when you put on a trade, it is in anticipation of making money. Every other trader in the world who puts in on a trade does so for the same reason. Now, when you look at your relationship with the market from this perspective, you could say that your purpose is to extract money from the markets, but by the same token, the market's sole purpose is to extract money or opportunity from you. So, if the market is a group of people interacting to extract money from one another, then what is the I'm scroll down कीजिए थोड़ा. What is the market's responsibility to the individual trader? It has no responsibility other than to follow the rules it has established to facilitate this activity. The point is, if you have ever found yourself blaming the market or feeling betrayed, then you have not given enough consideration to the implication of what it means to play a zero sum game. Any degree of blaming means you have not accepted the reality that the market owes you nothing, regardless of what you think, what you want or think, or how much effort you put into your trading. राइट In the market, यही तक करते हैं मतलब अभी इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. okay, मैं ऊपर कर देती हूँ सो ठीक है. दैट यही से क्या था बट एट द सेम टाइम But इसके पहले लव थोड़ा सा बताती हूँ कि हम सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे थे कि Okay. एवरी इंडिविजुअल हर बच्चा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव डिफरेंट डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट डिफरेंट कंट्री डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में रहता है और Correct. वो जिस हिसाब से उसकी अपब्रिंगिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग उसका साइकोलॉजी उसका बिहेवियर सब मैटर डेवलप करता है होता है. डेवलप होता है. लेकिन मार्केट जो है वो एक ही पैटर्न पे चलता है. मार्केट के जो इमोशंस हैं वो सेम रहते हैं लेकिन बिल्कुल. जो लोग ट्रेड करने आते हैं उनके इमोशंस उनकी फीलिंग्स उनकी सोचने का तरीका वो सब अलग अलग होता है. तो इसके आगे करेक्ट फिर ये करेक्ट बट द मार्केट रिमेन सेम. तो इसके आगे बेसिकली जो मेरे को समझ में आया है वो अभी तक की रीडिंग में ये था कि हमारा कोई भी बैकग्राउंड रहे, कोई भी सिचुएशन के थ्रू हम लोग कैसे भी किसी भी संस्कार के थ्रू हम होकर अगर अभी तक निकले हैं, डजंट मैटर. पर अगर हम मार्केट से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट मार्केट शुड बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर, जिस प्रकार से अगर सोसाइटी में हमारे साथ कुछ गलत होता है तो उसको रिमीडिएट सोसाइटी कर देती है. देयर कोर्ट्स होते हैं, बहुत कुछ आपको जजमेंट आपको वो मिल जाता है, जस्टिस मिल जाता है. बट मार्केट में ऐसा नहीं है. मार्केट में अगर आपका इंटेंशन है कि आप जा रहे हो पैसा कमाने, तो मार्केट भी आ रहा है वहां से आपसे पैसा कमाने. सो नाउ यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि आप भावनाओं में मत बहो और उनसे एक्सपेक्टेशन ये मत रखो, कभी भी गलत एक्सपेक्टेशन मार्केट से मत रखो कि हमारी गलती के लिए मार्केट जिम्मेदार है. नहीं, हम खुद जिम्मेदार है हमारी गलती के लिए. कोई गलत ट्रेड में कूदते स्टॉप लॉस हिट होता है, इट्स आवर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम स्टॉप लॉस नहीं लेते और बड़ा लॉस बुक करते, दैट इज ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि मार्केट उसको रिमीडिएट करेगा, बिकॉज इट वोंट हैपन. यू वुड प्रोबेबली एंड अप लूजिंग योर होल कैपिटल. बट मार्केट की वो जिम्मेदारी नहीं है, ना उसने कभी बोला मैं ये मेरी जिम्मेदारी है, और ना ही हमें अज्यूम करना चाहिए. सो दैट्स व्हाट आई हैव गॉट द जिस्ट ऑफ दिस पेज. यस. तो कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा इस पैराग्राफ में, क्या की पॉइंट लर्निंग ली? यस मैम. एक तो जो जब स्टार्टिंग में इन्होंने पढ़ा इसको मैच्योरिटी ऑफ ट्रेडर के बारे में कुछ पता लगा कि किस तरह की मैच्योरिटी है. मतलब बच्चों वाली मैच्योरिटी नहीं होनी चाहिए जब ये मार्केट में उतरते हैं. और एक जीरो सम गेम और फॉलो द मार्केट रूल्स whatever market is doing. Don't try to what you want to do market to do. जो उन्होंने पहले बताया. और इसमें ये बताया कि एफर्ट्स आप ट्रेडिंग में कितने अच्छे से डाल रहे हो, जो भी आपने लर्न किया है रूल्स
सीखे वो फॉलो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो मार्केट इज लाइक ए बैटल ग्राउंड, इसमें लॉस ही होगा मैक्सिमम, जो भी अगर आप गलत करोगे तो लॉस होगा। राइट राइट, बैटल ग्राउंड बिल्कुल सही बोला कि उधर एक चूक हुई नहीं तो आपकी जान जा सकती है। यस, तो उधर क्या होता है, एकदम अलर्ट रहना पड़ता है चारों तरफ से। तो यहाँ भी लोग आपके पैसे लेने के लिए बैठे हैं। आपने गलती की नहीं, आपके पैसे उड़ जाएंगे, जी। है ना। संतोष जी चलिए आप पढ़िए। Okay. In the market, yes, you know, in the market, typical social values of exchange do not come into play. If you don't understand this and find a way to reconcile the differences between the social norms you grew up with and the way the market works, you will continue to project your hopes, dreams, and desires onto the market, believing it's going to do something for you. When it doesn't, you will feel angry, frustrated, emotionally disturbed, and betrayed. Taking responsibility means acknowledging and accepting at the deepest part of your identity that you, not the market, are completely responsible for your success or failure as a trader. Granted, the market's purpose is to separate you from your money, but in the process of doing so, it also provides you with an endless stream of opportunities for you to take money from it. When prices move, that movement represents the collective actions of everyone negotiating at that moment. The market also generates information about itself and makes it extremely easy to enter and exit trades depending, of course, on the number of people participating. From the individual perspective, price movement information and the ability to enter and exit trades represents opportunity to see something and to act on what you perceive. During each movement, the markets are open. You have an opportunity to enter a position, lighten up a position, add to a position, or exit a position. These are all opportunities to enrich yourself by taking profits or at least cutting your losses. Let me pose a question. Do you feel responsible for fulfilling some other traders' expectations, hopes, dreams, and desires? Of course, you don't. It sounds absurd to even ask. However, if you ever find yourself blaming the market and feeling betrayed, that is essentially when you are doing. You are expecting the collective actions of everyone participating in the market to make the market act in a way that gives you what you want. You have to learn for yourself how to get what you want out of markets. The first major step in this learning process is taking complete and absolute responsibility. Taking responsibility means believing that all of your outcomes are self generated, that your results are based on your interpretations of market information, the decisions you make, and the actions you take as a result. Taking anything less than completely responsibility sets up two major psychological obstacles that will block your success. First, you will establish an adversarial relationship with the market that takes you out of the constant flow of opportunities. Second, you will mislead yourself into believing that your trading problems and lack of success can be rectified through market analysis. Let's consider the first obstacle. When you project any degree of responsibility onto the market for giving you money or cutting your losses, the market can all too easily take an equity of an adversary or enemy. Losing when you expected the market to do something different from what it did will tap you into the same childlike feelings of pain, anger, resentment, and powerlessness that all of us felt when someone took something away from us, didn't give us what we wanted, or wouldn't let us do what we wanted. Okay. No one likes to feel denied
especially if we believe that getting what we want will make us happy. In each of these situations, something or someone outside of us prevented us from expressing ourselves in some particular way. In other words, some outside force was acting against the inner force of our desires and expectations. As a result, it feels natural to assign the market the power of an outside force that either gives or takes away. But consider the fact that the market presents its information from a natural perspective. That means the market doesn't know what you want or expect, nor does it care, unless of course you trade the kind of position that can have a major impact on prices. Otherwise, each moment, each bid, and each offer gives you the opportunity to do something. You can put on a trade, take profit, or take off a loser. This is also true for those of you who are floor traders and are personally known to other floor traders who may also know your position and to your determined purposely take advantage of that knowledge. It just means that you have to be faster and more focused or take whatever limitations you have in these areas into consideration and trade accordingly. ओके ओके From the market's perspective, यहाँ तक डिस्कस करते हैं पहले, है ना? यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, ये इन द मार्केट टिपिकलिटी, यहीं से ना? yes, हाँ जी। in the market. ओके, प्लीज शेयर कीजिए अपनी लर्निंग. Yes, ma'am. इसमें author focusing on mainly responsibility. जो भी ट्रेड आप ले रहे हो based on your rules or study. So whatever market is responding back, whether it's a loss or a profit based on your study, जो भी price action हो रहा है. So trader should take the responsibility whatever he is doing and do not blame the market, because क्योंकि market तो वैसे ही चलेगी जैसे चलना है. जो हमने अपनी स्टडी के हिसाब से जो भी ट्रेड्स या पोजीशंस ली है, वो जो भी हमने रूल्स फॉलो किए, अगर हमने अच्छे से फॉलो किए तो उसमें मार्केट उससे प्रॉफिट मिलेगा. अदरवाइज अगर लॉस मिलता है तो बी रिस्पॉन्सिबल, हम्बल एंड टेक दैट लॉस एंड कम आउट ऑफ मार्केट एंड देन थिंक ऑफ अ न्यू ट्रेड, फ्रेश पोजीशन. राइट राइट, बिकॉज अगर टेंशन में ही वही काम फिर से किया तो वही गलती हम फिर से रिपीट करने वाले हैं. यस यस, है ना? तो अगर फ्रेश माइंड से करेंगे और अपनी जब तक गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे तभी हम दोबारा उसे रिपीट नहीं करेंगे. यस. तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस जरूरी है. और रिक्वेस्ट करते हैं प्रकाश जी से पढ़ने की. प्रकाश जी यहाँ से पढ़ना है. ओनली नाउ he is going to be smarter about it. Only now he is going to be smarter about it. He is going to put some effort into it and learn everything he can about the markets. It is perfectly logical to think that it is perfectly logical to think that if he can win not knowing anything, he will be able to clean up when he does know something. But there is a big problem here that very few, if any, traders will have an awareness of until long after the damage is done. Learning about the market is fine and doesn't cause a problem in itself. It is the underlying reason for learning about the markets that will ultimately prove to be his undoing. As I said a moment ago, the certain shift from joy to pain usually creates quite psychological shock. Very few people ever learn how to recoil these kinds of experiences in a healthy way. Techniques are available, but they aren't widely known. The types of response in most people, especially in the types of person attracted to trading, is revenge. For the traders, that only way to extract the revenge is to conquer the market, and the only way to conquer the market is through market knowledge, or so they think.
In other words, the underlying reason for why the noise trader is learning about the market is to overcome the market, to prove something to it and himself, and most important, to prevent the market from hurting him again. He is not learning the market simply as means to give himself a systematic way of learning, but rather as a way to either avoid the pain or prove something that has absolutely nothing to do with looking at the market from an objective perspective. He doesn't realize it, but as soon as he, please scroll, made the assumptions that knowing something about the market can prevent him from experience pain or can help satisfy his desires for revenge or to prove something, he sealed his fate to become a loser. In effect, what he was done in a setup are irrecoverable dilemma. He is learning how to recognize and understand the market collective behavior patterns, and that good. It even feel good. He inspired because he assumes he is learning about the market in order to become a winner. As the result, he will typically go on a knowledge quest, learning about the trend lines, chart patterns, support and resistance, candlesticks, market profits and point and line charts, Elliott waves, Fibonacci retracements, oscillator, relative strength index, stochastics, and many more technical tools, numerons to mention. Please scroll. पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ऑथर ने कहा है, और ये सब साइकोलॉजिकल चीजें, जैसे अभी हमने कहा ना एग्जाम्पल के साथ कि जैसे ट्रेडर का लॉस होता है, फिर वो प्रॉफिट में जब ब्रेक इवन पे आता है तो फिर और प्रॉफिट की उसे होप रहती है, और जब वो एक जुए की तरह सोचता है, यही सब चीजें मतलब टिपिकली अभी के जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है उसमें लॉजिकली थिंकिंग की बात, और उसमें कि मतलब जहाँ पे डैमेज हो रहा है वहां पे हमें निकल जाना चाहिए। लोग वहां पे निकल नहीं पाते और लोग वहां पे स्टक हो जाते हैं। जब स्टक हो जाते हैं तो उसे और नीचे लेके जाते हैं प्लेयर्स। तो जैसे कि मतलब मार्केट चलने वाला है, वो हमारी टेक्निकल एनालिसिस मतलब एग्जाम है, यहाँ पे रिजल्ट सामने ही मिलेगा शाम को। मतलब जैसे इंट्राडे ट्रेडर है तो रिजल्ट उन्हें शाम को ही मिलेगा कि अरे क्या है 3:30 तक उन्हें रिजल्ट मिल जाएगा, प्रॉफिट या लॉस, वो सही हो गया या गलत हो गया, ठीक है। तो यही चीज मतलब ज्यादातर ऑथर ने शेयर की है। और बाद में कि हमें जो लगता है, हमारे एजम्पशन हम जो मेड मतलब जैसे बनाते हैं, जैसे अभी हमने आज पैसा लगाया कोई किसी स्टॉक पे या किसी चीज पे हमने आज पैसा लगाया और हमें लगता है कि ऊपर जाने वाली, ठीक है, हम एज्यूम करके ट्रेड करते हैं। पर एजम्पशन अगर गलत हो गया, मतलब बिना मतलब टेक्निकल नॉलेज, बिना फंडामेंटल नॉलेज या बिना मार्केट की कोई भी नॉलेज हम अगर यूज नहीं कर पा रहे उसे, तो हम 100% लॉस में ही, मतलब वो कभी ना कभी, ठीक है, जैसा कसिनो के जैसा 2-3 लाख हमारे चले गए, फिर कभी ना कभी तो वो लॉस हमें देने ही वाले चीजें। तो वो चीज ऑथर ने कहा है, तो इसीलिए ट्रेडर को ये चार्ट पैटर्न्स, ऑसिलेटर्स और ये सब जो इंडिकेटर्स जैसे उन्होंने डिस्क्राइब किए वो सीखने चाहिए। थैंक यू। ओके, वेरी गुड। मार्केट का नॉलेज लेवल। थैंक यू मैम। कोई और शेयर करेगा? यस मैम, यहाँ पे ना ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द रिवेंज एज वेल। हाँ, रिवेंज, हाँ वो। कि अगर आपका कुछ लॉस हुआ है तो डोंट एंटर विद द रिवेंज दैट कि आपने वहां से जो आपका लॉस हुआ है उसी टाइम निकालना है। और एक और चीज जो उन्होंने बताई, नोवाइस जो भी ट्रेडर्स हैं, दे स्टार्ट लर्निंग अबाउट द मार्केट टू बी द विनर ऑफ द मार्केट एवरी टाइम। तो वो बाद में उनको हर्ट कर सकता है, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर बार जीतते रहेंगे मार्केट में, कभी तो लॉसेस भी होंगे। तो उनको भी आपने इस तरह से हैंडल करना है कि इट शुड नॉट डिस्टर्ब योर साइकोलॉजी। ये 2-3 चीजें। और एंड में बोला है कि एज अ रिजल्ट ही विल टिपिकली गो ऑन अ नॉलेज क्वेस्ट। यस, सो टेक्निकल एनालिसिस तो फुल तरीके से पढ़ लेगा, सारे टूल्स वगैरह अप्लाई भी कर लेगा, लेकिन जब लॉस आया तो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा उसको।
हाँ, तो उसके लिए साइकोलॉजिकली भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी यस यस। है। ओके, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे रिक्वेस्ट करते हैं पद्मांग से टू रीड फर्दर। Curiously, even though his knowledge has increased, he now finds that he has developed problems executing his trades. He hesitates, second guesses himself, or doesn't put on the trade at all, in spite of any number of clear signals to do so. It's all frustrating, even maddening, because what has happened doesn't make sense. What he was supposed to do? He learned not only find that the more he learned, the less he took advantage of. He would never believe that he did anything wrong by devoting himself to learning. He simply did it for wrong reasons. He won't be able to trade effectively if he's trying to prove something or anything for that matter. If you have to win, you have to be right. If you can't lose or can't be wrong, you will cause yourself to define and perceive categories of market information as painful. In other words, you will view as painful any information that market generates that is in opposition to what will make you happy. The dilemma is that our minds are weird to avoid both physical and emotional pain. And learning about the market will not compensate for the negative effects or pain avoidance mechanism have on our trading. Everybody understands the nature of avoiding physical pain. Accidentally set your hand on a hot burner, and your hand moves away from the heat automatically. It's an instinctive reaction. However, when it comes to avoiding emotional pain and the negative consequences it creates, especially for traders, very few people understand the dynamics. It's absolutely essential to your development that you understand these negative effects and learn how to take conscious control in a way that help you fulfill your goals. नीचे आइएगा, मतलब नीचे करेगा. Our minds have a number of ways to shield us from information that we have learned to perceive as painful. For example, at a conscious level, we can rationalize, justify, or make a case for staying in a losing trade. Some of the more typical ways to do this are to call our trading buddies, talk to our broker, or look at indicators we never use, all for the express purpose for gathering non-painful information in order to deny the validity of painful information. At a subconscious level, our minds will automatically alter, distort, or specifically exclude information from our conscious awareness. In other words, we don't know at a conscious level that our pain avoidance mechanisms are either excluding or altering the information being offered by market. Consider the experience of being in a losing trade when the market is making consistently higher highs and higher lows, or lower highs and lower lows against your position. While you refuse to acknowledge you are in a losing trade because you have focused all your attention on the ticks that go in your favor. On the average, you are only getting 1 out of 4 or 5 ticks in your direction, but it doesn't matter because every time you get one, you are convinced the market has reversed and it is coming back. Instead, the market keeps going against you. At some point, the dollar value of the loss becomes so great that it cannot be denied, and you finally exit the trade.
the first reaction that traders universally have when you looking back at such a trade is, why didn't I just take my loss and reverse? The opportunity to put on a trade in opposite direction was easily recognized once there was nothing at stake. But we were blinded to this opportunity while we were in the trade, because at that time the information indicating it was an opportunity was defined as painful. So we blocked it. So we blocked it from our awareness. When our hypothetical trader first started trading, he was having fun. He was in a carefree state of mind. He had no personal agendas and nothing to prove. As long as he was winning, he put his trades on from a let's see what will happen perspective. The more we won, the less he considered the possibility of ever losing. When we finally did finally did lose, he was probably in a state of mind where he at least expected it. Instead of assuming that the cause of his pain was in an erroneous expectation about what the market was supposed to do or not do, he blamed the market and resolved that by gaining the market knowledge, he could prevent such experiences from recurring. In other words, he made a dynamic shift in his perspective from carefree to preventing pain by avoiding losses. The problem is that preventing pain by avoiding losses cannot be done. The market generates behavior pattern and the patterns repeat themselves, but not every time. So again, there is no possible way to avoid losing or being wrong. Our trader won't sense these trading realities because he is being driven forward by two compelling forces. First, he desperately wants that winning feeling back, and second, he is extremely enthusiastic about all of the market knowledge he is acquiring. What he does not realize is that in spite of his enthusiasm, when he went a carefree state of mind to prevent and avoid mode of thinking, he shifted from a positive to negative attitude. He is no longer focused on just winning, but rather on how he can avoid pain by preventing the market from hurting him again. He is no longer focused on just winning, but rather on how he can avoid pain by preventing the market from hurting him again. This kind of negative perspective is not any different from the tennis player or a goal who is focused on trying not to make a mistake. The more he tries not to make a mistake, the more mistakes he makes. However, this mode of thinking is much easier to recognize in sports because there's a more discernible connection between one's focus and one's result. With trading, the connection can be obscured and more difficult to recognize as a result of positive feeling being generated from discovering new relationship in the market data and behavior. Since he is feeling good, there is no reason to suspect that anything is wrong, except that the degree to which his focus is weighted towards pain avoidance is the same degree by which he will create the very experiences he is trying to avoid. In other words, the more he has to win and not lose, the less tolerance he will have for any information that might indicate he is not getting what he wants. The more information that he has potential to block, the less he will be able to perceive an opportunity to act in his own best interest.
Learning more and more about the market only to avoid pain will compound his problem, because the more he learns, the more he will naturally expect from the market, making it all more painful when the markets don't do their part. He has unwittingly created a vicious cycle where the more he learns, the more debilitated he becomes. The more debilitated he becomes, the more he feels compelled to learn. The cycle will continue until he either quits trading in disgust or recognizes that the root cause of his trading problem is his perspective, not his lack of market knowledge. राइट पद्मा, कैसा लगा ये वाला पैराग्राफ पढ़ के? तो ये पैराग्राफ सब हमारी ऊपर, मतलब हम मोस्टली ट्रेडर्स जो हम लोग सीख रहे हैं, तो अप्लाई होता है कि हमारी जो मार्केट से रिवेंज मोड में लड़ने के लिए जो एक साइकोलॉजी होती है कि हम एक ट्रेड में एंट्री मारते हैं, फिर उसको जब तक वो हम गलत होते हैं तो पहले बात एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि हमने इतने सारे टूल यूज किए हुए हैं, इतने सारे एनालिसिस किए हुए हैं, और मार्केट से अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हमसे फंस जाते हैं और एक छोटा पेन का बड़े पेन में कन्वर्ट कर देते हैं। जबकि एक आइडियल सिनारियो में अगर हम गलत है तो एक्सेप्ट करके उसको काउंटर ट्रेड लेना इज अ गुड आइडिया, इंस्टेड कि उस सेम ट्रेड में फंस के अपने लॉस को बड़ा करना। तो मोस्टली वही होता है कि गलत होते हैं और एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से हम बहुत ज्यादा देके चले जाते हैं, और जब एक बार गलत हो जाते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि अब इससे ज्यादा शायद हमें और सीखने की जरूरत है, तो उसके लिए हम अलग अलग इंडिकेटर्स को हम ट्राई करते हैं कि और बेहतर क्या हो सकता है, सो दैट हमारे विनिंग चांसेस बढ़ते रहे और हम कभी फेल ना हो। तो अल्टीमेटली जो यही आता है, हमारी साइकोलॉजी में लगता है जितना अधिक हम सीख जाएंगे अलग अलग इंडिकेटर्स के बारे में और सबको हम एक कॉम्बिनेशन के साथ यूज करेंगे तो हमारे विनिंग चांसेस बढ़ जाएंगे। जबकि ऑन द अदर साइड हम इतना मेहनत करने के बाद जब वापस से री एंटर करते हैं किसी पोजीशन में, तो फिर हमारे दिन में एक यही होता है कि हमने इतना ज्यादा एफर्ट डाल के सब कुछ सीख के आए, अब गलत नहीं होंगे हम। जब फिर गलत होने के बाद भी हम रुके रहते हैं और तो इस विशियस साइकिल में फंसे रहते हैं हमेशा के लिए। तो लर्निंग मोर इज नॉट इम्पोर्टेंट, accept your mistake and do a counter trade or basically to get into a better trade. राइट एब्सोल्युटली राइट। और नए नए कोर्सेज करते जाते हैं, नए नए वीडियोस देखते जाते हैं, नए नए ट्रेनर्स के पास जाते रहते हैं, सोचते हैं इतना पैसा खर्चा कर दिया ट्रेनिंग पर फिर भी सक्सेस नहीं आ रहा है। उसके सिखाने में गलती थी या मेरे सीखने में गलती थी, है ना? और यही मतलब इसी डायलेमा में कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं। और ये एक वर्ड आया था बीच में, डेबिलिटेटेड। इसका मीनिंग मैंने गूगल पे चेक किया, दुर्बल, कमजोर। तो वो जितना और कमजोर बनता है उतना और सोचता है और सीख लेता हूँ, है ना? और अपने आप को वो स्ट्रोंगर बनाने की बजाय वो सोचता है कुछ और नई टेक्निक सीखता चला जाता हूँ। चल, तो इस पैराग्राफ में पर्टिकुलरली पूरा का पूरा यही बोला गया है कि आपको अपने जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव है उस पर काम करना है पहले, है ना? ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बहुत सारे वीडियोस देख लिए तो सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। और एक चीज जो लास्ट सेशन में सर ने हम सबके साथ शेयर की थी, वो अभी इस बुक में भी आया था कि आपको कौन सी अपनी इमोशन सबसे ज्यादा हर्ट करती है उस पे काम करना है। रिमेम्बर सर ने बोला था कि हाँ मैं कभी भी टॉप पर नहीं बेच पाता था, तो उन्होंने क्या किया, उससे वो परेशान हुए क्या कि मैं टॉप पे नहीं बेच पाता हूँ? वो डिप्रेस्ड हुए क्या? नहीं हुए। उन्होंने उसका तरीका निकाला, है ना? ये लाइन देखो ना, ये इधर है, ही इज नो लॉन्गर फोकस्ड ऑन जस्ट विनिंग बट रादर ऑन हाउ ही कैन अवॉइड पेन बाय प्रिवेंटिंग द मार्केट फ्रॉम हर्टिंग हिम अगेन। तो चलिए एनीवेज हम फटाफट से अपना आज फिर से लंबा एक्सीड हो गया, गोल राइटिंग और ग्रैटिट्यूड राइटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमें उससे रुकना नहीं है। रोज हमें जरूर अपना गोल लिखना है और ग्रैटिट्यूड भी लिखना है। सो आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स, प्लीज राइट योर गोल्स एंड ग्रैटिट्यूड।
और मैं अपनी गोल में ये भी लिखती हूँ दैट जीएसके के सभी स्टूडेंट्स बहुत ही सक्सेसफुल और खुश हैं। Thanks a lot. Thanks. तो हम गोल लिखेंगे और उसके बाद जो ग्रैटिट्यूड है वो किसी भी कोई भी एक मेंबर शेयर कर सकता है, कोई भी एनी वन ग्रैटिट्यूड, एंड देन वी कैन वाइंड अप द सेशन। ओके, तो शोभा जी ने, हाँ शोभा जी बोलिए। certain ROI daily earning. तालियां, जबरदस्त तालियां शोभा जी के लिए। अभी तो सब छोड़ा हुआ 1 महीना बाद। कुछ छूटता नहीं है शोभा जी, सब यही रहता है। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, है ना? छूटता कुछ नहीं, आप बस वो स्पिरिट बनाए रखिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आप सभी का इतने बिजी समय शेड्यूल में से अपना इतना कीमती समय हमारे लिए आप लेकर आए और इस बुक रीडिंग सेशन में पार्टिसिपेट किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सिखाया। कल सेम टाइम पर नहीं मिलेंगे, कल हम मिलेंगे 8:30 PM शाम को बुक रीडिंग सेशन में। बाय बाय, गुड नाइट। Okay, thanks. Thank you. गुड नाइट।